अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ वैलेंसी। वैलेंसी जो है दिस इज सिंपली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एलिमेंट्स एंड देयर कॉम्बिनेशन वी आर गोइंग थ्रू अ शॉर्ट टॉपिक दैट्स कॉल्ड एज वैलेंसी। वैलेंस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। वैलेंसी एक्चुअली होता है मेजरमेंट ऑफ द कंबाइनिंग पावर। इट्स सिंपली अ मेजर फॉर द कंबाइनिंग पावर ऑफ द एटम्स with the atoms of the other elements as well। अगर हम एक एलिमेंट ले लें उसके जो एटम्स होते हैं उनकी जो कंबाइनिंग पावर होती है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स विद द अदर एटम्स, उसकी इस कंबाइनिंग कैपेसिटी और कंबाइनिंग पावर को हम वैलेंसी के नाम से जान सकते हैं। सो वैलेंसी इज द मेजर ऑफ इट्स कंबाइनिंग पावर विद द अदर एटम्स व्हेन इट फॉर्म्स द केमिकल कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स। सम एलिमेंट्स में हैव मोर देन वन कंबाइनिंग पावर व्हाइल अदर्स में हैव ओनली वन। कुछ एलिमेंट्स का एक से ज्यादा कंबाइनिंग पावर हो सकता है, वैलेंसीज एक से ज्यादा हो सकती हैं, और बहुत सारे एलिमेंट्स का सिर्फ एक ही वैलेंसी हो सकती है। इसके अलावा हमने दिस कंसेप्ट ऑफ वैलेंसी को दूसरे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि वैलेंसी की इज डिफाइंड एज अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट एंड इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स और द नंबर ऑफ द क्लोरीन एटम्स और डबल द नंबर ऑफ द ऑक्सीजन एटम्स विद विच वन एटम ऑफ एलिमेंट कंबाइंस। ये वैलेंसी को हम इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने या नंबर ऑफ हाइड्रोजन और नंबर ऑफ द क्लोरीन एटम्स के बराबर होता है और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स के बराबर होता है विद विच वन एटम ऑफ द एलिमेंट कंबाइन, जिनके साथ एक एटम किसी एलिमेंट का कंबाइन होता है। सो हाउ मच द नंबर ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स और द नंबर ऑफ द क्लोरीन और द नंबर ऑफ द ऑक्सीजन एटम्स दे आर गोइंग टू मीट विद वन एटम ऑफ द एलिमेंट कंबाइंड एज वेल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिखा है कि वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो 2 है, मीन्स दैट वन एटम ऑफ ऑक्सीजन कैन कंबाइन विद 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब ये हुआ कि वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन कैसे हम 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑक्सीजन का एक एटम है वो 2 हाइड्रोजन एटम के साथ मिलके वाटर मॉलिक्यूल बना सकता है। सो हियर वी कैन सी द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज सिंपली 2। दैट मीन्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन एटम इज यूजुअली बीइंग बाउंडेड विद 2 हाइड्रोजन एटम्स इन द वाटर मॉलिक्यूल। सिमिलरली यहाँ पे हम एक और चीज देख सकते हैं। The valency of chlorine is simply 1. It means one atom of chlorine can combine with one atom of hydrogen in the formation of HCl। अगर हम HCl की बात करें, हाइड्रोजन क्लोराइड की बात करें, तो यहाँ पे हमें क्लोरीन की वैलेंसी 1 होगी, क्योंकि क्लोरीन का एक एटम यहाँ पे हाइड्रोजन के एक एटम से मिलकर बनाता है हाइड्रोजन क्लोराइड। सो द वैलेंसी ऑफ दिस क्लोरीन इन HCl is simply 1। यहाँ पे नीचे एक और बात हमारे एग्जाम्पल में आई है, दैट्स कॉल्ड एज द नाइट्रोजन। द नाइट्रोजन वैलेंसी आई हैव रिटन ओवर हियर इज 3। दैट मीन्स the compound of this atom of hydrogen has this compound of this hydrogen with that of nitrogen has the formula NH3. That means the valency of nitrogen is here 3, as it can simply combine with the 3 hydrogen atoms as well। तो भी हमने ऊपर वाली डेफिनेशन में लिखा कि कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन और कितने नंबर ऑफ क्लोरीन और कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन के साथ मिलके एक एटम एलिमेंट का कंबाइन होता है, वो इस एटम की वैलेंसी कहलाएगी। how many atoms did one atom of an element combine? That is simply the valency। तो यहाँ पे हमने देखा वाटर में, यहाँ पे हमने देखा कि वाटर की जो मॉलिक्यूल हमने ऊपर भी पढ़ा, तो यहाँ पे सिंपली जो ऑक्सीजन है इसकी वैलेंसी 2 है, 2 हाइड्रोजन के साथ मिलके बनाता है। HCl में यहाँ पे क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, बिकॉज एक ही हाइड्रोजन यहाँ इसके साथ मिलता है क्लोरीन के साथ। और अमोनिया में हमारी नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, 3 हाइड्रोजन के साथ मिलके बनाता है अमोनिया का कंपाउंड। सो इसके अलावा यहाँ पे हमने लिखा कि वैलेंसीज ऑफ सम कॉमन नॉन मेटल एलिमेंट्स आर। यहाँ पर बहुत सारे नॉन मेटल एटम्स हमने लिखे हैं, उनकी वैलेंसीज हमने लिखी है। हाइड्रोजन इज वन ऑफ द नॉन मेटल एंड इट्स वैलेंसी इज 1। फ्लोरीन इज हैविंग 1, क्लोरीन इज हैविंग 1 वैलेंसी एंड ब्रोमीन इज हैविंग 1 वैलेंसी। दैट मीन्स दे कैन हैव one atom that can have one atom for the combination as well। And oxygen it's having the valency 2। sulfur is having the variable valencies, यहाँ पे बहुत सारी valencies इसकी हैं 2, 4 and 6। nitrogen it's having the valency 3 and carbon it's having the valencies 4।
That means they are having the 4 types of these atoms or the electrons, sorry, to combine with the different types of the atoms of the other elements as well. तो इसके अलावा हमने यहाँ पे पढ़ना है कि वैलेंसी ऑफ एन आयन किसको हम कह सकते हैं। क्योंकि आयन्स जो होते हैं वो चार्जेड पार्टिकल्स होते हैं, कि चार्जेड एटम्स होते हैं, उनको हम सिंपली आयन्स कह सकते हैं। तो वैलेंसी ऑफ आयन कैसे हम डिफाइन करते हैं, यहाँ पे हमने लिखा है कि वैलेंसी is defined, this valency of an ion is defined as the units of the positive or the negative charges present on the ion. कितने units of positive जिनको हम cations के नाम से बोलते हैं, और the units of negative जिनको हम anions के नाम से जानते हैं, प्रेजेंट होते हैं आयन पे, वो उस आयन की वैलेंसी कहलाएगी। अगर 2 नंबर ऑफ कैटायंस होंगे तो उसकी वैलेंसी 2 होगी, अगर 3 नंबर ऑफ कैटायंस होंगे तो उसकी वैलेंसी 3 होगी, इनको हम ट्राइवेलेंट भी कह सकते हैं। और अगर इसकी एनायन की एक नेगेटिव चार्ज है तो इसको सिंपली द एनायन दैट्स कॉल्ड एज द मोनोवैलेंट और द डाइवेलेंट दे मे हैव। सो वी आर हैविंग द एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एग्जांपल ली है सोडियम की, Na पॉजिटिव यहाँ पे ऊपर दिख रहा है, दिस इज एन आयन ऑफ दिस सोडियम। दिस सोडियम आयन हैज 1 पॉजिटिव, क्योंकि इस पे एक ही पॉजिटिव चार्ज है, सो इट्स वैलेंसी इज सिंपली 1। दिस इज सिंपली द वैलेंसी ऑफ एन आयन, हाउ मेनी टाइम्स these charged particles are present over there. The charged sign is, since we have 1 charged sign, this positive sign, so its valency is 1. यहाँ पे हम दूसरा आयन देख रहे हैं, दिस इज कैल्शियम डाइवेलेंट। कैल्शियम डाइवेलेंट पे ऊपर हम देख रहे हैं इस पे 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं, सो इट्स वैलेंसी इज सिंपली 2। इट्स वेरी मच सिंपल। एंड एल्युमिनियम ट्राइवेलेंट, यहाँ पे हम सिंपली देखते हैं एल्युमिनियम की 3 पॉजिटिव चार्ज हैं, सो इट्स वैलेंसी इज 3। एंड सिमिलरली वी आर हैविंग क्लोरीन की एक ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इट्स वैलेंसी इज 1। एंड ऑक्सीजन की 2 नेगेटिव चार्जेस ऊपर हैं, सो इट्स वैलेंसी इज 2। सो दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल्स वेयर वी कैन सी द वैलेंसी ऑफ एन आयन इज बीन एक्सप्लेन्ड एज वेल। इसके अलावा यहाँ पे हमने देखा है, चूंकि हमने अभी देखा कि डिपेंडिंग अपॉन वेदर द वैलेंसी ऑफ एन आयन इज 1, 2 और 3, चूंकि यहाँ पे हमारी वैलेंसीज एक ही नहीं होगी, यहाँ पे वैलेंसी कभी 1 होगी, 2 होगी, या 3, या कभी 4 भी हो सकते हैं जो अभी हमने देखी। दे मे बी कॉल्ड एज मोनोवैलेंट फॉर दैट 1 वैलेंसी, द डाइवेलेंट फॉर दैट 2 वैलेंसीज, एंड द ट्राइवेलेंट फॉर द 3, एंड टेट्रावैलेंट रेस्पेक्टिवली फॉर द 4। सो इफ वी आर हैविंग द वैलेंसी 1, इट्स कॉल्ड एज मोनोवैलेंट। इफ वी आर हैविंग द 2 वैलेंसी 2, then it's divalent. If we have valency 3, then it's tri, and if we have 4 valencies in some cases, so these are called as the tetravalent simply. So for writing the formula of the ionic compounds, it's essential to know the valencies of the cations and the anions present on the compound. अगर हमें formula लिखना हो किसी ionic compound का, तो उसके लिए जरूरी है कि कितने number of cations और कितने number of these anions जो present होते हैं compound के ऊपर, ये पहले जानना जरूरी है कि cations और anions कितने हैं, तो फिर उसी के हिसाब से हम उस compound का नाम दे सकते हैं। यहाँ पे हमने नीचे कुछ एग्जाम्पल्स ली हैं मोनोवैलेंट कैटायंस की, और डाइवेलेंट कैटायंस की, और ट्राइवेलेंट कैटायंस की, और इसके अलावा हमने यहाँ पे लिखी है सम एनायंस। जो ऊपर वाला हमारा जो यहाँ पर बॉक्स है, इस बॉक्स में हम कैटायंस मोनोवैलेंट, डाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट की एक इसमें बयान कर रहे हैं एग्जाम्पल्स की तरीके से। और नीचे जो हमारा ये वाला बॉक्स है, तो इन 3 बॉक्सेस में हम एनायंस, मोनोवैलेंट, डाइवेलेंट एंड ट्राइवेलेंट एनायंस को यहाँ पे हमने कोड किया है। तो पहले ही जो मोनोवैलेंट कैटायंस हैं जिनकी वैलेंसी 1 है, यहाँ पे हम देखते हैं दिस इज हाइड्रोजन आयन, इट्स हैविंग द वैलेंसी 1 बट इट्स सिंपली द कैटायन। यहाँ पे सोडियम एक और एग्जांपल है, सोडियम पॉजिटिव वैलेंसी इज 1, एंड पोटेशियम पॉजिटिव, दिस इज वैलेंसी इज 1, सिल्वर दिस इज वैलेंसी 1, एंड कॉपर दिस इज वैलेंसी 1, एंड गोल्ड दैट्स Au positive, that's valency 1. And here we see the copper can also exist in the divalent conditions, and also we're having this gold can also exist in the trivalent conditions as well। जो हमने इससे पहले भी पढ़ा कि चंद एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो मोनोवैलेंट और डाइवेलेंट जिनकी वैलेंसी 2, 3 या 1 भी या हो सकती है, वो एक से ज्यादा वैलेंसीज में एग्जिस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डाइवेलेंट कैटायंस में हमें पढ़ा है देख रहे हैं हम मैग्नीशियम डाइवेलेंट, यहाँ पर वैलेंसी 2 है, कैल्शियम की 2 है, और यहाँ पर बेरियम की 2, और कॉपर जो है दिस इज द रोमन written, this is the Roman तरीके से हमने इसे लिखा है, the copper, this is the valency 2, that's called as the copper, and exists in the valency, it's here the valency of copper is 2. Copper they can have more than that, that's why we have written over here this is the 2. However we're having the iron, that's called as this 2, this is iron also, the valency is 2, that's 2 positive, and zinc, that's 2 positive, and cobalt, that's 2 positive। इनको हम divalent cations कह सकते हैं। और trivalent cations में यहाँ पर देख रहे हैं एल्युमिनियम हमें ट्राइवेलेंट कैटायन में दिख रहा है 3 पॉजिटिव, क्रोमियम 3 पॉजिटिव, आयरन 3 पॉजिटिव। अभी हमने देखा कि आयरन
आयरन डाइवेलेंट भी एग्जिस्ट करता है और ट्राइवेलेंट भी एग्जिस्ट कर सकता है। और गोल्ड यहाँ पे ट्राइवेलेंट गोल्ड, यहाँ पे इनकी वैलेंसी 3 है। इसके पहले हमने मोनोवेलेंट में भी पढ़ा, यहाँ पे गोल्ड का एक ही चार्ज है, दैट्स कॉल्ड एज द मोनोवेलेंट, एंड गोल्ड कैन एग्जिस्ट आल्सो इन द ट्राइवेलेंट कंडीशंस एज वेल। इसके अलावा हमने यहाँ पे पढ़ना है कि एनायंस जो होते हैं, कि एनायंस बहुत सारे मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट भी हो सकते हैं। इनकी सारी एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे हमारा है हाइड्राइड, दैट्स if we have one charge, that's called as valency 1. This has been called as hydride. If we have one negative charge or hydrogen atom, it's simply hydride, and this ion is hydride. And hydroxide, when we are having this OH negative, that's hydroxide. Chloride, that is Cl negative. Bromide, Br negative. Iodide and nitride, and that's NO2 negative, and nitrate, NO3 negative. These are all the types of the ions where we are having a single negative charge. These are called as the monovalent ions. Divalent ions में हमें दो negative charges मिलेंगे। यहाँ पे carbonate CO3 negative, and we are having the sulfide SO3 negative, and sulfate SO4 negative, sulfide S negative, and oxide oxalate, and also chromate. In all these conditions, we are simply saying that the valency is 2. So these are called as the divalent, but these are anions as they are negatively charged. And also we are having the trivalent anions. यहाँ पे हमें 3 नेगेटिव चार्जेस मिलेंगे, दैट मीन्स PO4 3 नेगेटिव, दैट्स फॉस्फेट, बोरेट, अर्सनेट, नाइट्राइट, एंड वी आर हैविंग द फॉस्फाइड. So in all these conditions, the valency is usually 3 and are called as the trivalent, but they are negatively charged. These are called as the trivalent anions. तो इन दोनों बॉक्सेस में, इन दोनों कैटेगरीज में हम देख रहे हैं कि we are having the different types of the element show the number of the valencies. यहाँ पे variable valencies आपको देखने को मिलेगी. अभी हमने देखा कि गोल्ड जो है वो मोनोवैलेंट और इसके अलावा ट्राइवेलेंट कंडीशन में भी एग्जिस्ट करता है. यहाँ पे कॉपर डाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट कंडीशन में भी एग्जिस्ट करता है. आयरन यहाँ पे डाइवेलेंट कंडीशन और ट्राइवेलेंट कंडीशन में भी एग्जिस्ट करता है. सो दीज टाइप्स ऑफ वैलेंसीज आर कॉल्ड एज द वेरिएबल वैलेंसीज. सो वेरिएबल वैलेंसीज आर द काइंड ऑफ द वैलेंसीज where an atom where an element is having the variable valencies. They may have the different valencies, so these are called as the variable valencies as well. यहाँ पे हमने देखा कि कॉपर shows a valency of 1 as well as 2. कॉपर को हम ऐसे Cu positive or Cu2 positive भी लिख सकते हैं. This is a variable valency for the copper. Similarly, we are having the iron 2 as well as 3. That means the iron can exist as 2 positive and iron can exist as 3 positive. This is called as iron. This variable valencies for copper and iron as respectively. Also, we are having we can simply written in the Roman, जो भी हमने पढ़ा कि Roman हिसाब से इसको देख सकते हैं. Like copper, this is having the variable valency 1, and this copper is having the variable valency. So this is the variable valency for the copper. That is Cu positive and Cu2 positive. And iron Cu2 positive and iron 3 positive, and so on. Similarly, we are having the sulfur. It can have a valency of 2, 4, and 6 in these compounds, like that of hydrogen. This is hydrogen sulfide, where we are having the valency of the sulfur 2, because sulfur atom is usually being linked with the 2 hydrogen atoms in the first case. Now SO2, also we are having the in the second case we are having the valency of copper. The sulfur is simply 4, and also we are having SO3. SO3. This is the compound where we are having the valency of sulfur is simply 6 respectively as well. इसके अलावा हमने पढ़ा है कि जो फास्फोरस होता है, फास्फोरस में जो वैलेंसी होती है वो 3 और 5 होती है. 3 और 5 in the different types of the compounds, like that of PCl3 and PCl5. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फास्फोरस यहाँ पे 5 है इसकी वैलेंसी, और यहाँ पे फास्फोरस की वैलेंसी है वो 3 क्लोरीन के साथ यहाँ पे मिला हुआ है. That's how the valency of phosphorus is 3 and this is 5 in this condition. So in nutshell, we can say the different elements may have the different types of the valencies altogether. So dear students, by tomorrow we'll take our next topic, like that of how we can write the chemical formula for the different compounds. Thank you.